फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. I'm Soumya Kapoor, and India have been pushed on the back foot in this T20I series against West Indies after losing the second game on the trot. Well, to talk more about the glitches, Hardik Pandya's captaincy, I have with me Network 18 Group Source Editor, K. Srinivas Rao, Chetan Narula, and Jamie Walter joining me in the show. Hi guys, how are you? Hey guys. Hey. Hi. So, see, starting with you, Hardik Pandya has, straightforward blamed the batting for this kind of a loss. I mean, how ridiculous is that? I agree, batting nahi chala, but straightforward, yeah. Okay, I really wouldn't give too much of a thought to Hardik, the captain, and raise any question on that front. Okay, first of all, it's I mean, I know it's a bit of I'm digressing a bit, but what is the importance of playing a T20 series right now? Yeah. It's a waste of time. Yeah, they're Hmm. literally wasting a time. They could have just played two more ODI if you really wanted to kind of, so why a good example why there is no reason to, bilateral context. There's no bilateral context. Why it lacks any meaning. This is the kind of reason. Yeah. So as far as Hardik, the captain, is concerned, I'm not really going to overthink this too much right now. Primarily because here's the same guy that I have lauded in back-to-back IPL seasons for actually, kind of, especially that first season of his captaincy when Gujarat Titans won the title. Yeah. I think he was a guy who led from the front. He actually set an example in terms of how Titans pursued that season. And Yeah. I'm still hoping, wishing, and I know that, Hardik has that kind of a head on top of the shoulders, and that's not gone anywhere. I think he's in a very good space. It's just Yeah. that, sometimes it happens that when you're playing cricket that lacks any kind of meaning, you tend to probably, your mind tends to kind of Yeah. be a little vague, and I think that's the kind of space he's in. Yeah. But Chetan, but the bottom line is you are playing an international match, right? You have to, give 100%. I'm not saying you're not giving 100%, but you need to have that kind of a planning. You need to have that kind of an execution, right? And that is lacking right now, and that's becoming a source of frustration for the fans as well. You're not audible, Chetan bhai. Okay, so yeah, there are a few things. First of all, तो पहले मैं कहूँगा कि what Srini has said, I want to disagree a bit with there. You can't have played 5 ODIs because this is part of the new FTP. FTP में there are no more 5 ODIs. You only play 3 ODIs. आप 5 ODIs तब खेल सकते थे अगर आप T20s रिड्यूस कर देते. वो आप रिड्यूस कर नहीं सकते क्योंकि आपको 2 यूएस में खेलने हैं. तो 2 यूएस में खेल रहे हो, एक वेस्ट इंडीज में, एक कैरेबियन में खेल रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है. तो या तो वो यूएस वाले आप छोड़. The other thing is, I don't look at the series as a waste because, the World Cup is in the West Indies and US, or maybe not in the US, but at least in the West Indies next year. And this is the last time we get to know these conditions. And these are the players. I think some of these players will be playing. I know some of them, they will definitely not be playing. Okay, so these guys will get a first-hand view, even if they lose the series. But they should not be losing the series. And I don't want to play. I don't want to blame Hardik Pandya here that much. जैसे Srini ने कहा कि he's, we've just been celebrating him the way he's been performing in the IPL and international cricket as captain and everything. So I don't want to blame him as captain completely. I think the management is to blame because they don't have a balance between ODI World Cup planning and T20 World Cup planning. I want to blame the selectors कि आपने गिन के 8 बैट्समैन भेजे हैं. यहाँ तो आप डीन मारते हो कि हम 3 व्हाइट बॉल टीम्स खड़ी कर देंगे एक ही मैच के लिए, और यहाँ पे आपके पास 2 एक्स्ट्रा ऑलराउंडर नहीं भेजे गए या 2 एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं भेजे गए, एक 18 बंदों का स्क्वाड नहीं भेजा गया आपसे. And the argument कि चीफ ऑफ सेलेक्टर नहीं थे, that is also bullshit क्योंकि व्हाइट बॉल स्क्वाड चीफ सेलेक्टर के आने के बाद अनाउंस हुए हैं और चीफ सेलेक्टर भी वेस्ट इंडीज में ही बैठे हुए हैं. So there is, so blame अगर किसी को करना है तो उनको करना है. हाँ,
What Hardik Pandya says, that is also justified. That the batsmen were completely to blame. जब आप 7 बैट्समैन खिला रहे हो सिर्फ, जब आपको मालूम है कि 4 आपके जो टेल एंडर्स हैं वो नंबर 11 बैट्समैन हैं, यू हैव नथिंग टू डू कि आपको वो 7 बैट्समैन को ही बनाना है. आपको दिखा कि न्यू बॉल पे रन नहीं बन रहे हैं, पावर प्ले में रन नहीं बन रहे हैं. शुभमन गिल की शॉट आप देखिए, ईशान किशन 27 रन बनाए. ठीक है, he spent a bit of time at the crease, but then he threw away his wicket. और संजू सैमसन के बारे में तो मैं ना ही बोलूं तो बेटर है. एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम, नॉट हिज ओन टाइम. वो अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं इंडियन टीम में होके. सिलेक्टर्स का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का, सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं इस टाइम पे. वो संजू सैमसन अपना टाइम तो उनका जो है उनको बर्बाद करना ही करना है, वो तो दिख ही रहा है. हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं संजू सैमसन. आई डोंट थिंक संजू सैमसन शुड बी प्लेइंग T20 क्रिकेट फॉर इंडिया एनीमोर. ही शुड नॉट बी प्लेइंग एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया एनीमोर. बट जिस तरीके से ये अपॉर्चुनिटीज जो वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम. सो ओवरऑल हार्दिक नॉट रॉन्ग कि आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड इनफ. बैटिंग फर्स्ट करते हुए 150 पे रुक जाना, दैट वाज नॉट गुड इनफ. या दैट वाज ब्लंट कि संजू सैमसन को कोई भी फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए. एंड विद दैट आई विल कम टू यू जेमी. कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हो रही हैं फ्रॉम संजू सैमसन, राइट? मतलब दिस इज मेक एंड ब्रेक. इसके बाद मेरे ख्याल से जगह अगर मिलती है तो वो टोटल अकोमोडेशन होगा ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद. Yeah. I just come off a show where I said Sanju Samson, this team needs to stop. You can't even say experimenting because he's got 19 T20Is. Average 18 की है, strike rate 130 की. चलो strike rate is non-negotiable, हो गया वो. But 18 T20Is and only 1 innings of note. Why are you still playing him? You know, you have to pick someone not on the premise कि यार ना ये कुछ कर सकता है. वो कर क्या रहा है? Sanju Samson is an abject failure in T20s, just like Suryakumar Yadav is an abject failure in one days. They both need to be removed. But unfortunately, this team management still thinks that Suryakumar Yadav can win them a World Cup, which is why they're not going to win the World Cup. And this team thinks that Sanju Samson, at the age of 28, when you're 28 in this Indian team, you are a senior player. और जिस तरह के घटिया शॉट्स खेल रहे हैं T20 में, you need to drop him tomorrow and not go back to him and hope that someone, आप जितेश शर्मा को ले लीजिए, you know, आप ध्रुव जुरैल को, आपके पास ऑप्शंस है. which just to pick up on what Chetan was saying, selectors को बहुत यहाँ पे इनको ब्लेम देना पड़ेगा फॉर पिकिंग द रॉन्ग टीम. आप ऐसे स्क्वाड तब पिक करते हो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इस आईपीएल में आपको इनसे बेहतर ओपनर्स मिल सकते थे, इनसे बेहतर फिनिशर्स मिल सकते थे, इनसे बेहतर डेथ ओवर्स मिल सकते हैं, राइट? And just one thing I want to add on Hardik Pandya, I'm going to give him, unlike Chetan and Srini, I'm going to give him a massive chunk of the blame for this loss, right? आप मुकेश कुमार को डेथ में डाल रहे जब उनकी स्पीड 135 से ऊपर जाती नहीं है. आपके पास बना बनाया डेथ ओवर है अर्शदीप के नाम से, आपने उन्हें पावर प्ले बॉलर बना दिया और लगातार 2 मैच में जो आप बारीकी मार्जिन से हारे हो, आपने अब से आपके सबसे अनुभवी, सबसे सफल स्पिनर को आपने चौथा ओवर दिया नहीं. How do you defend? If this is the man who's going to lead us to the World Cup next year, we have a lot to worry about. Yeah. And Srini, I will just add to that exactly. मैं जिस point पे आ रहा था, अक्षर पटेल didn't bowl, right? If I'm not mistaken, ये मेरे लिए बहुत surprising था. युजवेंद्र चहल ने अपना चौथा ओवर नहीं डाला. Hardik needs to be blamed for this kind of errors because आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया था सिचुएशन को. एक टाइम पे आके आपने विकेट्स ले लिए थे. हाँ बिल्कुल. मतलब मैं एट द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन मैंने जब कहा कि I'm not going to give a lot of importance to the series, I meant it in terms of the context, but that was in no way a kind of any kind of a justification in terms of where we lacked or where we have rather where we have lacked ever since we have landed on the shows. Of course the format, regardless of the format. तो वो बेवकूफी हमारी तब से शुरू नहीं हुई, बेवकूफी तो चल रही है. मैं वहां तो आई एम सॉरी वो थोड़ा it was lost in translation. What I meant earlier was that the entire what I'm witnessing, what I'm watching on TV, it's also a product. Now, I tend to look at things purely, पता नहीं मेरा दिमाग पैसा 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 क्यों सोचता रहता है. But I try to think, I try to put in a context from a viewer's standpoint also. And from that perspective, I keep saying that, it lacks any kind of context.
क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं हार्दिक का ही एग्जांपल, सिंस वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हार्दिक, मैं आपको हार्दिक का एग्जांपल देता हूं. यू नो, a player at his level, okay, Yeah. he, you see where he's coming from right now from a career standpoint. Kind of, Hmm. he's at a stage where Japan, I want to go, I want to win a title, I want to prove a point, I want, World Cup is coming, whatever. Now suddenly he's in the middle of a multi-series contest, okay, where he just come out of Hmm. ODIs. He's now captaining a T20 squad with a team that he's not interested in. Remember, this is not a squad that, ये अभी संजू सैमसन के बारे में चेतन भी बात कर रहे थे, and Jamie was also saying, and I Hmm. can tell you that even someone like Hardik doesn't know why this 11 or why this 15 has been given to him. Hmm. Okay, this has literally been thumped on his head कि ये लेके जाओ तुम Caribbean. Exactly. Okay, this is not a, आप सोचो एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, वहां गुजरात टाइटंस में ना वो 11 कौन क्या बॉलिंग करेगा, क्या करेगा, Exactly. वो और आशीष नेहरा बैठ के डिसाइड कर रहे हैं. Yeah. यहाँ पे this is a botched up thing. You have a coach who's looking east, selectors who are looking west, BCCI that's looking north, and the captain probably looking south, Hmm. right? And I'm not going to give too much of importance here in terms of what I'm watching. Who selected, whose brainchild is this team, whose theory is Absolutely. it who's like I'm if this is like, if everybody points a finger, if Ajit Agarkar, Rahul Dravid, BCCI, entire selection committee were to sit and say, no, this is what Hardik Pandya wanted, this is what we gave him, this is what he's traveled with, then I can Hmm. understand, right? To me, this is not Hardik's team. This is not what we envisage. This is not what he thinks. His ideas for T20 are very different. I can Yeah. also tell you at many times it has also happened that his idea from a T20 standpoint has clashed with that of Rahul Dravid. Okay, Yeah. no disrespect, Rahul Dravid is who he is. Again, from a T20 standpoint, I'm talking about a cricketer who's won 5 T20 titles and Hmm. has played 6 high profile IPL final matches, right? Hmm. Has participated in of quite a few T20 World Cups. So obviously he understands the format, and this is his ideas have been in clash, at sort of a standpoint with those of Rahul Dravid. But And Srini, okay, yeah, I understand that the kind of team he had, that's fine. ये वो team है जो उनको नहीं चाहिए थी या जो भी है. But hmm, when you are out there in the field, right? When you're out there battling it out, आपके पास players हैं, आपको पता है आपके पास दो ऐसे experienced players हैं जो शायद मैच निकाल सकते हैं और बहुत या तो आप वन साइडेड हार रहे हो तो still I would have about that कि यार ठीक है, नहीं, आपकी टीम ही नहीं है, आप बहुत क्लोज नहीं, जाके नहीं, उस मैच को हार रहे हैं, hmm. नहीं, डिसीजंस कहीं ना कहीं क्वेश्चन Again, मार्क. नहीं, सौम्य, यहाँ पे देखो एक चीज आई जस्ट टेक इट फ्रॉम वेयर श्रीनी लेफ्ट ऑफ. आप देखो, आप ये नहीं कह सकते हो कि प्लेयर्स आपके फील्ड पर हैं. आप प्लेयर्स आपके फील्ड पे होने पे आप 10 बॉलर और एक बैट्समैन पकड़ा दोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके 11 प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले इंटरनेशनल क्वालिटी के फील्ड पर हैं. ऐसे नहीं होता है. When in a T20 match, when your batting finishes at number 7, Yeah. it is so bad that आपने अक्षर पटेल को कल गेंदबाजी ही नहीं दी. Exactly Your what I mean. your one hand is tied behind your back. Yeah. And ठीक है, there are some decisions are baffling, जैसे चहल को लास्ट ओवर नहीं देना, बट वहां पे भी मैं ये कहूंगा कि देयर इज, आई एम प्रिटी श्योर द वे मुकेश इज बॉलिंग राइट नाउ, somebody is telling him कि नहीं, मुकेश को डेथ बॉलिंग देनी ही देनी है, because there is no other way, we have to trial him for death bowling. और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि between उनादकट and मुकेश, they are trying to prepare one of them as a backup pacer for the ODI World Cup. There is no other explanation कि आपके पास अर्शदीप होते हुए भी मुकेश आपके डेथ ओवर करा रहा है, या चहल का एक ओवर बचे हुए भी वो डेथ ओवर करा रहा है. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिपरेशन ओवरलैप दैट इज गोइंग ऑन. और आप ये पूरा स्क्वाड उठा के देख लो. आई कैन लिटरली नेम प्लेयर्स राइट नाउ. आप पत्थर पे लिख लो, ये प्लेयर अगले साल T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे. अक्षर पटेल नहीं होगा, संजू सैमसन नहीं होगा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से एक नहीं होगा, आवेश खान, उमरान मलिक में से एक नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुकेश भी नहीं होने वाले हैं. आपके अभी T20s इतने आ रहे हैं, आयरलैंड में आएंगे, एशियन गेम्स में आएंगे, यू हैव अ फुल एरे ऑफ T20 बैट्समैन ओवर देयर. तो ये जो टीम खेल रही है,
ये किस बिना पे खेल रही है ये किसी को नहीं मालूम है. मैं तो ये भी कह रहा हूं कि शुभमन गिल, ईशान किशन are not going to be your openers for the T20 World Cup next year. They should not be. Yeah. So ये जो खिचड़ी बनी है और पकड़ा दी गई है, आपने खिचड़ी बनाई है और आपने उनको परोस दी है और आपने बोला है कि जाओ मास्टर शेफ का अवार्ड जीत के आओ. ऐसे नहीं होता है. So, लेकिन जेमी, अगर ईशान और शुभमन, इफ व्हाट चेतन भाई सेइंग इज ट्रू, अगर ईशान और शुभमन आपके ओपनर्स नहीं होने वाले और आप इन कंडीशंस में दोबारा T20 क्रिकेट अभी नहीं खेलने वाले, तो आप जायसवाल को क्यों बेंच वार्म करा रहे हैं? गिव हिम अ चांस, नो, लेट हिम ट्राई. देयर इज अ क्वेश्चन. आपके टॉप 5 में से 3 तो एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं. इस बात पे मैं और जोर नहीं दे सकता. इट्स सो ब्लीडिंग ऑब्वियस. The point is, Ishan Kishan stats also don't justify. You have to pick players on stats. Just like I come on this show, I come with some preparation कि मैं कुछ बोलूंगा, पिछवाड़े से नहीं बोलूंगा ना, मैं stats के basis पे बोलूंगा ना. This team also has to be based on stats. And Chetan is right. Stats के basis पर ऐसे कुछ players हैं जिनकी जगह नहीं बनती है. But there is that, the word he did, the term you used, क्या था, the over. It actually makes sense what you were saying. Overlapping, right? It's because खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारकर आपको मजबूरन उस बंदे को मिडिल ऑर्डर पे खिलाने पड़ेगा जिनके मिडिल ऑर्डर आंकड़े 72 हैं. I'm talking about Ishan Kishan. But because you have to by default play him at number 4 in the World Cup now, you need to start playing him into it. But the numbers don't justify his presence. अगर आप सिर्फ रेपुटेशन को एक तरफ कर दें तो ये आधी टीम फील्ड पे नहीं उतरेगी भाई. प्रॉब्लम ये है ना. यू कैन टॉक अबाउट अगरकर, यू कैन टॉक अबाउट द सिलेक्टर्स, यू कैन टॉक अबाउट हार्दिक नॉट टेकिंग इट. यू स्टिल हैव अ जॉब टू डू, राइट? Hardik Pandya is taking some very strange calls. Maybe he's got a team that he doesn't want, but the problem is bigger than Hardik Pandya, right? The problem is bigger than selectors. Indian cricket is broken. It's broken from the fans. This is the worst administration the BCCI's ever had. Okay? They don't care. Their focus is something else. इनको politics खेलना है, इनको तू मैं खेलना है, इनको IPL फाइनल के सामने 10 फोटोज खिलाने, टीम कुक आएगा, इनको वहां बिठाना है. This is the broken, worst BCCI administration for obvious reasons. The test team is broken. This T20 team जिनकी हम यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, ये साली नंबर 1 रैंक टीम है यार. कहां से? Right? So it's futile us discussing on daily. We have to acknowledge that the coach is not the right coach. The captain is not the right captain. Who's going to fix this? Until this is fixed, we can all sit here and talk about this, that. आप संजू सैमसन को खिला रहे हो T20s में, आप स्काई को खिला रहे हो वनडे, आप कह रहे हो it's because Mukesh might be playing the one day. Does that justify not bowling Chahal in back-to-back games? If that's the case, फिर तो बंद कर दो ये shows यार. We'll do something else. Yeah, Srini, you were saying something. No, I like, I tend to agree with them. There's no doubt about this, that basic common sense obviously has gone for a walk. I mean, there's absolutely no doubt about it. And a couple of things I'll point out here. Number one is hi Chaitanya. So a couple of things here. Look at Rahul Dravid, okay, the coach, okay. With due respect, he doesn't belong here. He really doesn't belong here, okay. I'll address this later. There was it's a train of thought, so let me just go back to one point I want to make. It's almost like a fear, when I look at this team management, whether it is selectors, okay, Ajit has just come in, but generally the mindset, when it comes to the selectors or when it comes to generally the coaching staff and all, I somehow see that there is like a regressive mentality in terms of approaching a subject and addressing it. I'll give you an example. Okay. Now I know that when I close my eyes, and everybody I'm sure will agree that when you close your eyes and think T20 from an India squad perspective, Shubman, Ritu, this Rajasthan Royals boy, Jaiswal, and Ishan, okay, all 4 come to mind, right? When you close your eyes, you think T20, all the 4 guys come to mind, right? Now look at the funny thing, all 4 are categorically right now, the basis on which you think they're good T20 cricketers is because of their franchise that they represent and the results that we have seen. All 4 occupy the opener slot.
Okay, how exactly do you intend to address this issue? You can't go to the franchise एंड से कि नहीं आप ईशान को मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, जायसवाल को नंबर 3 पे खिलाओ, क्योंकि मैं शुभमन और गायकवाड़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, है ना? तो ये जो सीरीज होती है, दिस इज द काइंड ऑफ सीरीज वेयर you should be trying out the big picture that you have in mind. So what you are thinking basically is going to be at conflict with what a Mark Boucher is thinking at Mumbai Indians, what a Stephen Fleming is thinking at Chennai Super Kings, what a that Josh Butler and the Rajasthan Royals camp are thinking from a Jaiswal perspective. So understand this. So your ecosystem in terms of you being the selector, talent scout for Team India, your mind should actually be in line or at at a certain level with what these franchisees are thinking, right? Yeah. Are you thinking on those lines? Because if you are thinking on those lines, then the team that you are taking, the way you are addressing a T20 series, the purpose with which you are heading to a contest like this, everything lacks meaning, because I don't see any of the issue being addressed. और ये कब एड्रेस करने वाले हो? आपके पास टाइम ही नहीं है ये एड्रेस करने के लिए. Which is the problem? आपके पास Which is the problem? वन सेकंड, आपके पास ये एड्रेस करने के लिए टाइम ही नहीं है. क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि इसके बाद यू आर नॉट प्लेइंग अ T20 सीरीज ऑफ, you're going to get into the 50 over mindset. You're going to stop thinking, getting out completely out of the T20 mode, and then you'll go back into the T20 mode straight next year, where again IPL आके तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा. और IPL के भरोसे तुम स्क्वाड चुनने वाले हो. अब जब IPL के भरोसे तुम स्क्वाड चुनोगे, तो ये चारों लड़के ओपन कर रहे हैं. So how exactly are you determining? So there's one more problem, na Srini, because now every year you have an alternative ODI or T20 tournament. So the selectors, jo bhi hain, they need to have that particular chain of thought, and the coach has to have that particular chain of thought. Right now we have a coach jo ODI World Cup ke baad hone nahi wala hai. T20 side I was coming to that. That's what I was going to come to. तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद होने नहीं वाला है, तो उसकी सोच सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप तक लिमिटेड है. वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टर्स जिसमें से आधे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद होने नहीं वाले हैं. एक चीफ ऑफ सेलेक्टर आपके पास होने वाला है, लेकिन उसकी थॉट बाकी सेलेक्टर से मिल रही है या नहीं मिल रही है ये किसी को नहीं मालूम है. यू हैव एन ओडीआई कैप्टन, वो शायद ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद नहीं होने वाला. यू हैव अ T20 कैप्टन, वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद होने वाला है. और ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हाउ मेनी T20 सीरीज डू यू हैव? You have one Australia series, you have one South Africa series, you have one Afghanistan series. इन 3 सीरीज के भरोसे और फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ IPL के भरोसे आप अगला T20 वर्ल्ड कप चुनने वाले हो, आप अपना स्क्वाड चुनने वाले हो. तो जो खिचड़ी अब हो रही है वो खिचड़ी अगले साल भी होगी. ये नॉन स्टॉप है until and unless we have a group of selectors who are not only thinking about this year's tournament, they are parallelly thinking about next year's tournament and the next year's tournament. You have a coach and captain in line with that as well. चाहे वो कैप्टनसी चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो कोर ऑफ थिंकिंग है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. यहाँ पे चीफ ऑफ सेलेक्टर नहीं था, तो इन लोगों ने वही टीम भेज दी जो बांग्लादेश में थी. सोच के देखो एक मिनट के लिए, जो बांग्लादेश टीम गई थी उन्होंने वही उठा के वेस्ट इंडीज भेज दी. बीच में 4-5 महीने का जो क्रिकेट है उसको नजरअंदाज कर दिया. आर यू टेलिंग मी कि आपके पास इस आईपीएल में से 2 या 3 एक्स्ट्रा ऑलराउंडर नहीं मिले आपको? ठीक है, आप जडेजा को नहीं खिला सकते, आप ठाकुर को नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको उनको वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखना है. बट आप शिवम दुबे को भेज सकते हो, तेवातिया को भेज सकते हो, ध्रुव जुरेल को भेज सकते हो, रिंकू सिंह को भेज सकते हो, कितनों को भेज सकते थे आप? No, I fail to understand रिंकू सिंह इस टूर पे क्यों नहीं थे. मतलब it's bizarre. On that note, I'll just welcome Chaitanya. Chaitanya, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So we're talking about the kind of the way the Indian team has fared in this T20 series now. 2 मैचेस में 2 बार 2 हार, और कैप्टेंसी कहीं ना कहीं ब्लेम करने के लिए है हार्दिक पांड्या की. Your thoughts about his captaincy and the kind of decisions he is taking so far? See, I think यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ना, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन इज मेकिंग द डिसीजंस हियर. अगर हम सारे क्रिकेट को देखें, जो क्रिकेट हो रहा है, मेरे को नहीं लगता कि कोई कैप्टन यहाँ पर डिसीजन ले रहा है. इट्स द मैनेजमेंट डिसीजन, और ये ऐसा लग रहा है कि बाहर से टीम को चलाया जा रहा है.
पहली बात, लेकिन ये जो टीम बनी है, मतलब इस टीम को अगर आप देखें तो ये T20 साइड, मैंने पहले भी बोला था कि T20 साइड जो है ऐसी साइड है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टीम बनाई है। पहली बात, एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट गो एंड प्ले अ बेसबॉल। बेसिकली ये बेसबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये बात अभी से नहीं है, ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले से इंडियन टीम बोल रही है कि वी वांट टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। अरे भाई, आप लोग ऑलरेडी एग्रेसिव प्लेयर हो, आप हर बॉल को थोड़ी ना ग्राउंड से बाहर मार दोगे। आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू ऑल आर स्ट्रोक प्लेयर्स। व्हेन यू आर अ स्ट्रोक प्लेयर, then you don't need to go and just plan according, मतलब पहले से प्री प्लान मोशन के अंदर नहीं जाना कि बस मैं मारूंगा। अरे आप वैसी अच्छी बॉल को मार सकते हो, तो व्हाई यू वांट टू चेंज योर माइंडसेट? जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दो, एंड टू स्कोर रन्स यू नीड टू स्टे ऑन द विकेट। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ईशान किशन इस सीरीज में ठीक दिख रहे हैं, इस सीरीज का मतलब इस तौर पे ही ठीक दिख रहे हैं। शुभमन गिल हैज लॉस्ट द टच व्हाट ही वाज, बिकॉज इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एकदम से किसी प्लेयर को बहुत ऊपर ले जाते हैं। अभी हम उसके बारे में कैप्टेंसी की बात कर रहे थे, अभी हम सब उसके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट बोलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब दुनिया उसके लिए बहुत बड़ी बातें करती है, बट सूर्य कुमार यादव को ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज नॉट अ गली क्रिकेट, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। आप हर मैच में आके वो वाली सारी चीजें नहीं कर सकते। आपके वीडियोस भी जाते हैं, लोग आपकी मिस्टेक्स को भी वॉच करते हैं, और विकेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज अ बैड प्लेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टाइमिंग। अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जहाँ पे विकेट्स ट्रू हैं, अच्छी विकेट्स हैं, वहां पर आप लाइन में आके कैसी भी शॉट मारिए, यू कैन प्ले क्रिकेट अकॉर्डिंगली। मतलब अग्रेसिव क्रिकेट आप खेल सकते हो, आप लाइन में आके किसी भी बॉलर को प्री प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे बॉल इतना अच्छा विकेट से नहीं आ रहा है। तिलक वर्मा इज आउटस्टैंडिंग टैलेंट, he should try to bat more and more, like उसको एक एंकर रोल देना चाहिए, और लास्ट के 3-4 ओवर में फिनिशिंग का उसको रोल मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या अगेन नॉट शोइंग राइट कलर, बट हार्दिक पांड्या के साथ हम कह सकते हैं हार्दिक पांड्या अपने आप में बहुत मतलब कंप्लीट प्लेयर है। तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास बाकी बॉलिंग है ना, उसके अंदर मतलब उनको बैटिंग कहीं ना कहीं करनी होगी, उनको रन बनाने होंगे, चाहे 10 रन 15 रन 20 रन बनाने होंगे। बट फिर भी तो हम टीम पिक करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें अग्रेसिव खेलनी है, अग्रेसिव खेलो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप पुजारा को बोल सकते हो कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिकॉज ही डजंट हैव दैट माइंडसेट। सो जस्ट टू चेंज हिज माइंडसेट यू आर आस्किंग हिम टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। बट ये जितने भी प्लेयर हैं, ये ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव है। अगर आप इनको बोलोगे ना और अग्रेसिव हो जाओ, तो आई थिंक क्या होगा कि they will not score more runs and they will throw their wickets. As a bowler, I want these players to play more aggressive against me, because I know that he wants to just go and hit the ball. So as a bowler, I can plan accordingly. But I think we need to see कैसी conditions है, कैसी नहीं है। मतलब seriously, India series जीत जाए T20 की, कुछ भी हो, but losing these two T20 matches should hurt these players. इनको दर्द होना चाहिए दिल के अंदर कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। We are playing representing India. आप वेस्ट इंडीज से हार रहे हो, मतलब वेस्ट इंडीज जो कि अभी अपने आप में एक डायलेमा के अंदर है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। उनके दिमाग में कितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब यू कैन जस्ट आउटकास्ट देम। मतलब वो ऑलरेडी हारी हुई मैनेजमेंट है, हारी हुई टीम है, आप उसको एक मौका दे रहे हो, फ्लेयर दे रहे हो, ऊपर से फिर इंडियन क्रिकेटर्स लेजेंड्स बोल रहे हैं यू बैक योर टीम। सर आपको बैक किया तभी तो आप लोग यहाँ पे इतने बड़े स्टार हो। अगर ये लोग बैक नहीं कर रहे थे, आप इतने बड़े स्टार थोड़ी ना होते। इंडिया में प्रॉब्लम क्या, हम हारने के बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम गलत नहीं है, यू नीड टू बैक अस। व्हाई? when we make you demigod, then you never say कि आप इतना बड़ा भी हमें मत कीजिए। बट जैसे आप खराब करते तो आप कहते हैं हमें बैक कीजिए। क्यों करें? सही बात है। आप 10 साल में 3 ट्रॉफी भी जीते होते तो समझ आता कि आपको बैक करना चाहिए, आपकी टीम को बैक करना चाहिए। 10 साल से कोई भी एक भी ट्रॉफी नहीं लेकर आए। बट क्यों करें बैक? क्यों रीजन क्यों करें बैक? आपकी ड्यूटी है जीतना। आपकी ये आप खेलने जा रहे हो ग्राउंड पे, तो आप जीतने के लिए जा रहे हो ना। बेसिकली यू आर प्रोफेशनल, यू आर नॉट। देखिए हम कहते हैं स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, दिस व्हाट वी ऑल से एज अ स्पोर्ट्समैन, बट वो एज अ प्रोफेशन क्रिकेट नहीं, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे होते। जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो तो आपकी ड्यूटी है, जैसे आप जॉब पे आए हो तो आपको जॉब पे आके परफॉर्म करना है ना सर। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल देंगे। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर यही होता है कि भाई मैं खेलने आया हूँ, हम हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। क्यों? यू आर हाईली पेड गाइस,
You are getting great amount of money all through the season, all through the year. Yeah. आप भगवान है लोगों के लिए. आपकी फैन फॉलोइंग देखिए, बिकॉज वो किस लिए है? वो क्रिकेट के कारण है, या आपके टिकटॉक पे डांस करने के कारण है, या आपके इंस्टाग्राम पे डांस करने के कारण है? अगर वही है आपकी फॉलोइंग, तो आप क्रिकेट मत खेलो, थोड़े दिन करके देख लो आप टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे डांस, आपको कितने लोग फॉलो कर लेंगे. लेकिन लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रही. यहाँ पे तो बस ये दिख रहा है कि बस किसी तरीके से, यहाँ विराट कोहली को इतने मिलते हैं इंस्टाग्राम के, तो मुझे भी मिलने चाहिए. भाई विराट कोहली ने वो पाने के लिए वो एक अपना दायरा बनाया, अपने एक मुकाम बनाया. आप कहाँ पे आसपास भी नहीं, और आप अभी से लगे हुए हैं. तो आई थिंक we need to understand as a public also, we need to, when they don't do well, we need to tell them that guys, you are not doing well, we are not going to follow you. ये ट्रोलिंग जो होती है नई परफॉर्मेंस पे, वो राइट है, कोई गलत नहीं है. हाँ मतलब ओवर द बोर्ड जाए तो वो गलत है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आज कि इंडियन टीम खराब कर रही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? एज ए इंडियन, एज ए क्रिकेटर मुझे बुरा लग रहा है, एज ए सिटीजन मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी टीम एक ऐसी टीम से हार रही है, जो टीम इस वक्त खुद ही डायलेमा के अंदर है. उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो उनका फ्यूचर कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है, कितने लोग खेलेंगे उस कंट्री के अंदर. आपको एक प्लेयर हरा रहा है, पूरे एक प्लेयर का मैच हार रहे हो आप. 11 वहां पे क्या हिंदी बेचने गए हो? मतलब क्या करने गए हो? आप सोचो तो सही. व्हाट आर यू गाइस डूइंग देयर आउट देयर? मतलब एक ऐसी टीम है जो मतलब खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही कि करना क्या है. आई एम रियली वेरी ये फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गई. फ्रस्ट्रेशन तो क्रिकेट हो गई है, लेकिन श्रीनी यहाँ पे एक पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज तिलक वर्मा. तिलक वर्मा ने 2 मैचेस जो किया, दैट तिलक वर्मा एक पॉजिटिव. एंड आई हैड अ चैट विद हिज कोच अ कपल ऑफ डेज बैक, जो उनके चाइल्डहुड कोच हैं सलाम वैश. उन्होंने बोला कि कम में रुकने वाला नहीं है, ये बड़े क्रिकेट का प्लेयर है, बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर है, छोटे में रुकेगा नहीं. योर थॉट्स अबाउट द वे ही हैज बीन प्लेइंग? अच्छा, दिस गाय इज हिज चाइल्डहुड कोच, huh? Yeah. Okay. Yeah, interesting. No. So see, yeah, I mean, obviously, see, आपने बोला ये the only positive. You look at India's T20 story. This is not the only positive. There are a lot of other positives. Isn't Jaiswal a positive? There are so many positives across the IPL. If you, that's what. No. I'm trying to connect. That's exactly where I'm coming, Chetan. I'm saying that from an Indian cricket standpoint, there are quite a few positives. The point is, the team that you have carried there does not match up to the kind of positivity that Indian cricket is reflecting. So you are picking a bunch of guys, as everybody's been saying the same thing. You're picking a bunch of guys and going there. Chetan himself said, you have a coach who's is not going to continue after October. I can 100% tell you that after the month of November gets over, Rahul Dravid goes out as the coach of the Indian team. And also can tell you that until now, I don't think they have sat down to understand, identify what should be their strategy going forward. And as I said, once again they'll be like kind of trying to plan things at the last minute, and there won't be enough. 3 months the these same cricketers, 3 months they're going to be with their franchisees. So whoever comes in as the next coach of the Indian team is hardly going to get time with the players before going to a tournament as important as the World Cup, right? You asked me about what Tilak Varma being the only positivity, because he's the only name among the positive ones that you've actually bothered to travel there with, right? Whereas back home, I mean, imagine you've played at number 3 with Ruturaj Gaikwad in ODIs. So we discussed this the last time. It's not like you're going to give Virat Kohli's position to Ruturaj Gaikwad. Are you going to do that? You're not going to do that. So why not try? I can tell. I don't. The more I'm looking at this, and I'm not saying viewers think कि वहाँ पे मतलब उनको लगता है कि as a media guy I sit with the selectors and pick the team. So let me tell you, this is not me. This is how I think BCCI is going to be react. I've seen this is the last of we have already seen the last of Rohit and Virat in T20. I am thinking that way. The way I'm looking at BCCI function. मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेना. तो the way I'm thinking, they're not going to come back. Tell me. You saying something? Go ahead. No, go ahead. I'm not saying, looking at this Indian team management, going back to those names, which means, and then you have to figure out a place for Ruturaj. You have to understand how you're going to fit him. Who's going to open for you?
let us say you are going to pick next year's World Cup squad basis the IPL that happened this year. You can't pick the squad next year basis the IPL that is going to happen next year, because you'll already be into the IPL by the time the team would have had to be selected for the World Cup. So this IPL that you saw already that's gone by is obviously going to have a major role in the team that you pick next year. So by virtue of that, you know that you're not going to ignore Shubman. You know you're not going to ignore Jaiswal. You know you're not going to ignore Rutu. You know you're not going to ignore Ishan. How exactly are you going to plan your top order? You know you're not going to ignore what's this guy, Suryakumar Yadav. You know it. Whether you like his attitude, don't like his attitude, he's giving you the results from a T20 standpoint like no other batsman, right? So you know that you're going to continue betting on Suryakumar Yadav from a T20 standpoint. And sooner you understand the better that you don't need to include him in your 50 over plans. But anyways, you keep that aside. So I'm saying when you know that the problem with Surya is not with his batting, not with his approach, rather with his attitude, rather with the mentality that he tends to carry, you're going to have someone to sit down and talk to him about what is required from a team standpoint, India standpoint, whatever. The solution to every uh, problem that you come across is not picking or dropping. In between there are 100 different things that you can do, and whatever happened to that plain and simple idea of sitting across the table and explaining to a player why he belongs at this stage, for what reasons, and why does he need to bring a certain whatever kind of change in himself, right? This is how cricket, at whatever level, this is how cricket used to be approached. So what is so different? Has social media become too overbearing for you to constantly be under pressure? मुझे समझ में नहीं आता. That said, Not pressure. I Not pressure. completely agree with one thing. One last line. Pressure. Because this is No, you about finish. You finish. me. No, you finish. No, finish. Let's see, one last thing is, people tend to talk about BCCI this, BCCI that, and I'm saying, yes, you know what the problem with BCCI is? BCCI needs to just do one small thing. इसमें ज़्यादा rocket science नहीं है. Appoint a set of people, men, who are in tune with the game from today's perspective and today's standpoint. Give them a responsibility, take a step back, and stay there. Okay, everything will be fine. It's not like we don't have the talent. It's not like we don't have a we have everything that it needs, that is needed to pursue this space. We are second to none. It is just that people just need to do some things correctly. That's not happening. That's all. Chaitanya, I'll just come to you after this. Jamie, how do you rate Tilak Varma's performance so far? The kind of intent he has shown. No, एक 50 आ गया, एक 30 के अंदर है, but the kind of intent he has shown. Absolutely, I would not change a thing. जिस पिच पर बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े IPL stars, इनको बल्ला पकड़ने नहीं आ रहा. The guy is coming and playing outstanding knocks. 20 साल, 21 साल का भी नहीं है. Debut match में highest scorer. कल मतलब he scored double the runs than some big names. तो जो भी कर रहा है, इसके बारे में कम बात करें. Let's not jinx him. एक बंदा बैटिंग कर पा रहा है. लोग कह रहे हैं अरे conditions बहुत मुश्किल है, two paced है, tacky है. ऐसा कुछ नहीं है. आप थोड़ा अच्छे shots खेलो और ये कर रहा है. Hats off to him for grabbing his chances. I wish people like Sanju Samson had grabbed these chances 7 years ago. Yeah, Chaitanya, you were saying something. I am saying these players should be thankful to BCCI. BCCI कुछ गलत नहीं कर रहा. BCCI तो अपना काम कर रहा है. As a body आप अपना काम कर रहे हैं, but player की responsibility भी होती है ना कि player को भी कुछ करना है. As a player, अब BCCI अगर मुझे इंडिया खेलने का मौका दे रही है, तो it's up to me कि I want to stay there for long. I just want to come and play and make my followers and just go away and do other things. It is my duty. It is not BCCI duty. BCCI तो मेरे को replace करे किसी और को ले आएगी. तो यहाँ पे BCCI की प्रॉब्लम ये नहीं है. यहाँ पर प्लेयर को भी समझना होगा कि मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे क्यों पिक हूँ. आप तिलक वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा इज अ ग्रेट साइन, बट अगर आप तिलक वर्मा को देखो तो डोमेस्टिक भी अच्छा कर रहा है वो. तो आपको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को भी देखना होगा ना. आप डोमेस्टिक आप बात करें यशस्वी की, उसने भी डोमेस्टिक में अच्छा खेला है. आप बात करें मुकेश कुमार टीम में पिक हुए, उन्होंने आईपीएल बहुत ब्रिलियंट नहीं किया, लेकिन उनका डोमेस्टिक अच्छा था. आप बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, उन्होंने बहुत अच्छा किया.
अगर आप कल का मैच देखते हैं और हमारी अगर बॉलिंग देखते हैं, तो हमारी बॉलिंग में जो सबसे कम रन देने वाले थे वो थे स्पिनर्स। तो अक्षर पटेल कहाँ थे? क्या उन्होंने मूड चेंज कर लिया, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए? इम्पैक्ट प्लेयर दिमाग में चल रहा था मेरे ख्याल से कैप्टन का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आई थिंक दे आर थिंग्स व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात यही है कि आपको जो परफॉर्मेंस है सिर्फ आईपीएल से नहीं देखना। आईपीएल इज अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इक्वल टू इंटरनेशनल क्रिकेट। वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट देती है, आपको इंटरनेशनल लेवल का आपको एक्सपोजर मिलता है। आप वहाँ पे बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं जो आपको नहीं पता होती है। आप वो बड़े बड़े लेजेंड से सुनते हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे अपने माइंड के साथ काम करते हैं, वो सब आप सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर 4 या 5 या 6 होते हैं एक टीम में, लेकिन उसके बाद तो कुछ दूसरे प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं ना डोमेस्टिक। तो इट्स अ मिक्सचर। और वहां पे अगर पिटाई हो भी जाती है तो कोच ये कहता है, अगर आप 4 में 40-50 रन दे भी देते हो ना, तो कोच कहता है इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट वाज नॉट योर डे, नेवर माइंड, नेक्स्ट डे आल्सो, यू नो। सो जब हमारे अंदर ये आया था ना, यार आज नहीं कल दोबारा कर लेंगे, तो if we are okay to take the failure easily, then there is no urge to become, to pass that failure, to become a champion of the failure. So यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया कि आज नहीं तो कल से। अब वही है, पांच मैच की सीरीज है, 2 में नहीं करा मैच, तीसरे में कर दूंगा। लॉ ऑफ एवरेज। ये प्लेयर इतने बुरे तो है नहीं कि 4-4 मैच खराब करेंगे, 5-5 मैच खराब करेंगे। वो तो बैड फॉर्म ही आती है जब ये लोग इतना लंबा खराब करते हैं। अदरवाइज दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग इंडिया, सो दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। कुछ चुनिंदा प्लेयरों में से इनको मौका ज्यादा मिला। तो अगर ये प्लेयर ऐसे, तो इनको भी पता है लॉ एवरेज जो है इसमें, अगर ये 2 मैच में नहीं करेंगे, तीसरे में अच्छा कर देंगे। बट एज ए प्लेयर यू नीड टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली फॉर 15-20 मैचेस। उसके बाद 1-2 दिन खराब आने चाहिए, फिर ऐसे चलना चाहिए। मतलब आप 15-20 दिन अच्छा कर रहे हैं, फिर 1-2 दिन खराब है, फिर 15 दिन अच्छा कर रहे हैं। वो एज ए लेजेंड वो ही बनाता है आपको। बट ऐसे खेलते रहने में तो मुझे नहीं लगता कुछ लेजेंड कोई बन सकता है इनमें से। So I think they need to go back and think about themselves. I'll just take the final comment from Chetan भाई। चेतन भाई, एक पॉजिटिव जिसकी हम बात कर रहे थे, तिलक की, कितने इम्प्रेस्ड या अनइम्प्रेस्ड हैं आप अभी भी तिलक से? कितना अच्छा लगा, या इंटेंट के बारे में क्या कहना है? नहीं, अनइम्प्रेस्ड की तो बात ही नहीं है। ही वाज पिछले 2 साल से हम उनको आईपीएल में देख रहे हैं। फर्स्ट सीजन में जब वो आईपीएल में आए, मुंबई इंडियंस के पास कोई बैट्समैन नहीं थे, they were really struggling big time। तब उनको नंबर 3 और 4 का रोल दिया गया थ्रू आउट द सीजन। 3-4 उनको दिया गया, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वो रोल निभाया। देन लास्ट ईयर दे हैड प्रॉपर फॉरेन बैट्समैन कमिंग इन एंड स्कोरिंग रन्स एट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो उनको 5-6 का रोल दिया गया, उन्होंने वहां पे भी कर दिखाया जो भी उनको मौके मिले। तो वो टेम्परामेंट है उस बंदे में, पावर हिटिंग है, टेम्परामेंट सबसे बढ़िया मुझे उनका लगा है अभी तक। कि आप आ रहे हो, आप सिचुएशन देख रहे हो, आप बॉलिंग देख रहे हो, आप बॉलिंग के हिसाब से शॉट लगा रहे हो। आपने पहले मैच में 39 बना दिए, दूसरे मैच में आपने उसके भी आगे बना दिया। क्या होता है आज की डेट में, एक तरफ एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक तरफ ऐसा चल रहा है कि आईपीएल से उठ के इतने नाम आ रहे हैं हर स्पॉट के लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 नाम है। ठीक है, ये गलत बात नहीं है कि आप 3 टीमें पिक कर सकते हो, आप कर सकते हो, थोड़ी सोच की जरूरत है, वो सोच नहीं लगाई गई है। लेकिन हर स्पॉट के लिए इंडियन टीम में, T20 टीम में देयर आर 3 to 4 नेम्स। तो ये बंदा आ रहा है, इसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, उसने रन बनाए हैं और अब वो रहेगा। अब वो आयरलैंड सीरीज में भी नंबर 4 पे बैटिंग करेगा, एशियन गेम्स में भी नंबर 4 पे बैटिंग करेगा, वो हर सीरीज में नंबर 4 पे बैटिंग करेगा। उसने वो लॉन्ग रोप खुद को दे दी है। दूसरी तरफ एक संजू सैमसन है, आप देख लो कल उन्होंने क्या किया। बिल्कुल संजू सैमसन को देख के ही तिलक वर्मा इतने इंप्रेसिव लग रहे हैं कि भैया ये तो 2 इनिंग्स हैं। हम इस बंदे को 9 साल से देख रहे हैं, वो सबका टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, और यहाँ पे नई जनरेशन आ गई है, तिलक वर्मा। वी डोंट नीड पीपल लाइक संजू सैमसन अगेन। तो तिलक वर्मा। और मैं एक चीज बस ये कहना चाहूंगा कि अभी as good as what Srini said was right कि आपको सब कुछ छांटना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। I think personally कि थोड़ा सा फोकस हटेगा ओडीआई से और T20s की तरफ जाएगा। आयरलैंड हो, एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास 5 या 6 T20s हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अपने आप नाम छटकर ऊपर आ जाएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि एशियन गेम्स में जो ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, वहां पे आपके ओडीआई वाले खिलाड़ी नहीं होने वाले ना। वो लोग they will make a name for themselves by playing there, and उनके ऊपर वो फोकस नहीं होगा, वो लोग आराम से अपना स्पॉटलाइट से हटकर कंसंट्रेट कर पाएंगे। एंड
those are guys who want to do something for Team India on the international stage. तो अपने आप ही छठ के नाम आप देखना ऊपर आने शुरू हो जाएंगे. It'll just take some real thinking to form a proper lineup. That's all that will be needed. Yeah. चलिए, बिफोर एंडिंग तिलक वर्मा के कोच से मेरी बात हुई है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी पूरी जर्नी के बारे में. तो जितने भी व्यूअर्स हैं, आप स्टोरी चेकआउट कीजिए न्यूज़ 18 क्रिकेट नेक्स्ट की वेबसाइट पर. वेल, या Ashwini. No, I think that's yeah. No, I was just talking about the story. Yeah, I'll just give you a thumbs up. Yeah, so do check out that story. Well, thank you guys, thank you for joining us. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला. थर्ड मैच में इंडिया कैसे खेलती है, होपफुली वापस कम बैक कर सके. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. 10 मिनट में इंडिया नहीं, इंडिया Hello everyone. क्या वो सीरियसली लेते हैं अपने आप को? Yeah, वो इंटरेस्टिंग होगा. थैंक यू. Hello everyone. Welcome to our new show Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. कौन खेलेगा? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Well, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रिक संडे में होगा एक स्कूप फन, एक स्कूप मीम और एक स्कूप फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज. वेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब थ्रेड्स भी. इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और जितने प्लेटफॉर्म्स उतने मीम्स और कंट्रोवर्सीज भी. थोड़ी नोक-झोंक and a lot of entertainment. Join us every Sunday at 11 AM only on Cricket Next.